Welcome back, friends, to another episode of Golden Whispers. Vikas Joshi inspires aspirations. Friends, this is a series of daily reflections that aspire to ignite your passions, broaden your horizons, and guide you towards a life filled with a purpose. So get ready to be uplifted and motivated every day with Golden Whispers. Vikas Joshi inspires aspirations and cultivate a journey of personal growth together. ये श्रृंखला आपकी प्रेरणाओं को जगाती है और आपके उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कराती है. ये एक कोशिश है. दिस इज एन एफर्ट सो एज टू improve on your self confidence, on your self development. So before we begin today's topic, friends, I appeal to all of you that if you love this series, please like, share and subscribe, as it motivates me to create more such content. So let's begin. Today's topic is, friends, comparison is a confidence killer. I always say don't compare apples with oranges. ये अंदरूनी हमारी फितरत है को, या वी ऑलवेज फील अपने आप को किसी और से कंपेयर करना बचपन से यही होता आ रहा है. यू सी, व्हेन वी वर इन स्कूल्स, आवर एल्डर्स दे यूज्ड टू टेल अस, उसको कैसे अच्छे मार्क्स मिल गए, तुम्हें क्यों नहीं मिले? अरे वो उसका जाने, तुमने क्या किया तुमने बताना चाहिए था. व्हाट शुड हैव बीन द प्रोसेस? द प्रोसेस शुड हैव बीन दैट यू शुड हैव बीन टोल्ड दैट यू वर फेलिंग समवेयर व्हिच यू हैव टू करेक्ट फॉर. But what were you told? You were told, अरे उसको देखो अच्छे मार्क्स मिले, he is getting some good marks. Why are you not getting it? Now that question left you unanswered. That is where we went wrong. In the process, we killed our own confidence. So comparison is a quite thief of joy. I should say that. किसी दूसरे को कंपेयर करने से अपनी जिंदगी कैसे संवारने वाली है, सोचा ही नहीं था. सो इट क्रीप्स इन थ्रू आवर फोन्स, आवर कन्वर्सेशंस, आवर डे ड्रीम्स, whispering you should be further ahead. Look at them. That is what we were taught, and we are being in that mindset for years together. उसका कैसे चल रहा है देखो, भगवान ने उसको सब कुछ दे दिया. अरे तुम, भगवान ने तुमको भी तो दिया. Why didn't you do it? You see, God has not made any differentiation while creating human being. Everyone has been given same brain, 2 eyes, 2 hands, 2 legs, everybody. But the utility differs. The brain thinking power differs, and that is what is making you the difference in life. But what truly does damage is our confidence from inside out. जब हम दूसरे से कंपेयर करते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस चला ही जाता है, बिकॉज नाउ वी आर इन द मोड ऑफ थिंकिंग उसका कैसे है, व्हाट शुड बी द प्रोसेस, मेरा क्यों नहीं है, why I am not getting ahead, or where am I missing out. That should be the question you should ask. But in the process you are putting yourself in the shoes of others and thinking of what he is doing. भाई उसकी जिंदगी अलग है, उसके गोल्स अलग है, उसके चैलेंजेस अलग है, तुम्हारी जिंदगी अलग है. लाइफ इज पोजिंग चैलेंजेस टू एवरीबडी, यू आर नॉट एन एक्सेप्शन. So he is having his own ways of choosing the things, but you are having your own ways of choosing for yourself. So don't compare apples with oranges. So comparison isn't about inspiration, it's about measurement. इंस्पायर कैसे होगे तुम किसी और को, जो अगर वो अपना काम कर रहा है, वो सक्सेसफुल हो रहा है? हाउ आर यू गेटिंग इंस्पायर्ड विदाउट नोइंग हिज चैलेंजेस, हिज मेथड्स, हिज रेजिलिएंट कैपेबिलिटीज, एनीथिंग? और यही उल्टा कीजिए, व्हाई नॉट फॉर यू? हाँ, नाउ यू विल अंडरस्टैंड, अरे मुझे भी तो चाहिए. करेक्ट. दैट इज व्हाट आई मीन टू से, दैट डोंट कंपेयर विथ अदर्स. And when you live your life constantly measuring, you stop living. क्योंकि अब तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो गया है. अब अगर तुम्हें कुछ भी करना हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस चला गया. आप पहले पूछोगे उसने किया क्या? Why? वो अपनी जिंदगी जी रहा है, जीने दो. Don't meddle your way in his ways. You start competing in a race that was never yours to run for. अपनी जिंदगी जी रहे थे, अच्छे से जीते, कहां छूटा अपना, क्या मुझे इंप्रूव करना चाहिए, ये सोचते,
तो शायद तुम्हारी जिंदगी अच्छी बन जाती, लेकिन अभी यू आर इनटू द रेस विच इज नॉट फॉर यू। वो कोई और फील्ड में है, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, एंड यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद दैट सर्कमस्टांसेस उसके पता नहीं है आपको, और आप भगवान को बोले जा रहे हो, हे भगवान उसको दिया तूने, मुझे क्यों नहीं दिया। अब भगवान भी सोच रहा है, यार दीज आर टू डिफरेंट पीपल, हाउ कैन आई गिव द सेम थिंग टू दिस पर्सन। लेकिन आपसे बात नहीं हो पाती है, इसीलिए आप उसी में रहते हो, भगवान ने उसको दे दिया, मुझे नहीं मिला। What are you doing? You are taking yourself to a stagnation, to a loss of confidence, to a loss of your development. So we all do it, friends. We all scroll with someone else's life, career, relationship, and wonder why we are lagging behind. Circumstances उसके देख रहे हो, जिंदगी आपकी देख रहे हो, कहाँ पता चलने वाला है आपको? No, nothing is going to change in your life, friends, if you are comparing with someone else. But the truth is, everyone's story has its own clock. वो अपनी जिंदगी जी रहा है, उसके चैलेंजेस अलग है, उसके सर्कमस्टांसेस अलग है। Their path is not your path. Their success is not your failure. ये सोचना ही गलत है कि उसको अच्छे क्यों मिले। वो सोचूंगा तुमने कहाँ गलती की, वो सुधारो। So their success is not your failure. Their success is there. Your failure is yours. That is how you have to distinguish. Life is not a racetrack. It's a wild forest. So you walk, you stumble, you bloom in your own season. Constant comparison make you doubt your own journey, your own question, and your own pace. And the worst part, it blinds you to your own progress. जब हम दूसरों की तरफ देखने से अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी का फोकस लूज कर देते हैं। So don't worry about what others are doing. Worry about what your goal is and what changes are required that you achieve your goals in the defined time. So this letting go of comparison is like dropping heavy backpack. कुछ बोझा लेके चल रहे हो, उसे छोड़ देना है, नहीं चाहिए वो। You still feel lighter. बोझा हटा दो तो आपको बढ़ेगा, आपके स्टेप्स अच्छे लगेंगे, you will take steps towards your focused goal. Your heart feels freer. When you stop looking sideways, you finally start looking within. आप अपनी गलतियों की सुधारने की तरफ देख रहे हो, ना कि उसकी क्यों है, उसने कैसे किया। No, तो you don't require those things. That's where confidence begins. Not in being better than someone else, but in becoming better than what you were yesterday. The true self-confidence is quiet, friends. वो आवाज नहीं करता है, बढ़ता ही जा रहा है। It doesn't need to prove itself. It's rooted in self-respect, not in social likes. मुझे कितने लोगों ने अच्छा बोला, कितना, no, that is not required. You see the whether you are developing, whether you are on the right path, whether you are focusing on whatever goals you are set for. Don't compare yourself with others. God has given you tremendous skills and potential which are unexplored. अनएक्सप्लोर्ड क्यों कह रहे हैं? जब तक कि जिंदगी आपको चैलेंज नहीं दे रही है, आप अपने आप को स्किल्स एक्सप्लोर करोगे ही नहीं। कब करोगे? You see, whenever you are not facing any challenge, you are in your comfort zone. So you are on aram. So you have to develop yourself. So once you break free from comparison, your energy shifts. You start investing your time in your own growth instead of tracking others' growth. You see, दूसरे को कंपेयर करने हम क्या कर रहे हैं? अब उसका रिकॉर्ड आप रख रहे हो, जरूरत है क्या? नहीं, आपको अपना रिकॉर्ड रखना चाहिए, पर्सनल जर्नल, वो आपने अपना रखना चाहिए। उसका रख के क्या करोगे? You will be losing your confidence, you will be losing your focus. So your learning becomes joyful, your ideas become original, and your identity becomes, or it starts to take shape when you are concentrating on yourself, not based on imitation,
कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अपने खुद के स्किल्स डेवलप करो एंड यू विल रियलाइज इंटरेस्टिंग पार्ट फ्रेंड्स, आपको भी पता नहीं होगा इतने स्किल्स आप में है, आपका पोटेंशियल इतना है, लेकिन आप इग्नोर ही कर रहे हो खुद को। क्यों? सारा समय कंपैरिजन में बिता रहे हो। यही तो हम जिंदगी भर करके आ रहे हैं। उसका कैसे हो गया? अरे उसका होने दो। He has got his own ways, his own the problems, his own goals, which are in no way comparative to yours. So self-development thrives when you stop being distracted by everyone else's highlight and reel and focus on building your own deep, meaningful story. है ना? जब खुद की कहानी लिखना चालू करोगे तब याद आएगा, अरे ये तो मुझे आसान था, मैं तो कर सकता हूं। समय कहाँ गया? समय सारा गया दूसरे ने कैसे किया वो देखने में। इंटरेस्टिंग है कि लाइफ ने ऐसा कभी आपको बोला नहीं है, इसीलिए तो हर एक की जिंदगी अलग है, सोच अलग है, चलने का तरीका अलग है, गोल्स अचीव करने का तरीका अलग है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। सो द नेक्स्ट टाइम यू कैच योरसेल्फ कंपेयरिंग, कभी मन में ऐसा विचार आ गया उसका कैसे, पहले पॉज करो, स्टॉप, टेक अ डीप ब्रेथ, रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर नॉट बिहाइंड। अपने गोल अलग है, चैलेंजेस अलग है, अपने स्किल्स अलग है। वी आर ऑन द पाथ, you are on the path and it's the path no one else can walk. If someone is comparing it with you, let them compare. You don't lose your path. Comparison may be human, but rising above is divine. So compare करना ये human tendency है, natural process है, but don't allow it to creep into your life because that will take away your confidence, your self-respect, your self-development. So don't compete with others. Create. Don't copy. Have your own thing. Grow and above all, trust yourself, your timing, your mere presence in this world. The clock of your soul is never wrong, friends, because every person has got a different set of skills, a different set of potential, which are unexplored to the life till the life poses the challenges. And that is the way the life teaches us, friends. So instead of comparing with others, why not develop yourself? Don't waste your time. The moment आपको कोई बोलता उसका देखो, उसको उसको न रुको, मैं अपना देख रहा हूं, मुझे अभी ये देखना है कि मेरी गलतियां कहां हुई है और मुझे क्या सुधार करने चाहिए. That is developing, and that keeps you focused on your goals, and hence it enhances your development and also the self-confidence. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Golden Whispers, because Joshi inspires aspirations. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.